ओके, मेरी आवाज आ रही है? ओके, लेट मी स्टार्ट। शुरू करते हैं हम। तो इसमें हमने कुछ किया था अभी तक। मुझे लगता है मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा ताकि तुम्हें ठीक से कुछ आइडिया आए। तो बेसिकली r as a surface is a function of two variables. So r is equal to r at some uv, where these we can think of these pair of real numbers living inside a plane uv, तो which would be equivalent to R2 because these are real numbers. अब नाम तुम x y दे दो या uv दे दो, क्या फर्क पड़ता है? uv इसलिए दे रहे हैं, we already have यहाँ पे हमने इसको, तो इसकी रेंज है, उसका नाम हमने दिया है x y z। तो यहाँ पे एक surface रहती है, where we have taken an open set here that's mapped to this portion of the surface. ये तुम्हें सोचना है, मतलब this x is coming out of the screen. If in case you understand, we are inside the three-dimensional space में surface रह रही है, जैसे कोई कपड़े का छोटा टुकड़ा है जो इस तरफ तुम्हारे तरफ लहरा रहा है, ठीक है? तो इस तरह से ये मैप हो रहा है इस पे, मतलब ये सिर्फ एक स्कीमेटिक है, इट कुड बी एनीवेयर। तो हम मान रहे हैं, मान लो इस तरह से वो एक्स वाई जेड एक्सिस में। फिर हमने कहा ओके, अगर मैं फिर से ये बनाऊं, आई गॉट दिस यूवी प्लेन और यहाँ पे एक ओरिजिन है, राइट? फिर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी वो भी तो मैप होगी। इफ इट इज होल थिंग इज मैप्ड, होल थिंग क्रिएट्स अंडर द मैप आर दिस पैच ऑफ द सरफेस। सो उसके डोमेन में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट वुड क्रिएट अ कर्व, और उसमें जो ये वर्टिकल लाइन है वो भी कोई कर्व बनाएगी। तो इस तरह से हर वर्टिकल लाइन और हर जो कर्व्स बनेगी उनको हमने कहा ये सरफेस की पैरामीट्रिक कर्व्स। और हमने ये भी दिखाया कि वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली अगर हम मानते हैं सरफेस रेगुलर है, हम कह रहे हैं कि आर यू क्रॉस आर वी इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, which are basically the tangential vectors to my class of parametric vectors. ये मेरा आर यू है, आर वी है, और उससे जो हमने प्लेन जनरेट किया जो वहां टच करेगा टेंजेंट होगा टू द सरफेस, और उसको जो नॉर्मल होगी उसको हमने n कहा, द यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। तो मैं फिर से कहूंगा n को हमने माना आर यू द सरफेस नॉर्मल, and of course it will be defined when the point is regular। और हमने फिर इसका नाम h दिया, यानी ये जो यहाँ नीचे है, यानी h is the magnitude of the surface of the spectre, right? Okay, तो ये parametric curves का था। I hope you try to imagine and do it। वैसे मैंने examples दी, it could be a sphere, तो sphere का मतलब सिर्फ उसकी सतह जब मैं कह रहा हूँ, या cone, या तुम कोई और surface imagine कर दो। Okay, तो ये हमने किया था। फिर हमने देखा था एक्चुअली ये जो n का जो डायरेक्शन है, अगर प्रॉपर पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, we make a certain change of parameters, जो कि हमने एग्जांपल्स में देखा कि एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूली जो है हमें सेम सरफेस देते हैं, तो फिर हमने उन दो डिफरेंट फॉर्मूलीज को कहा टू डिफरेंट पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दैट सेम सरफेस, और उन दो सेट ऑफ पैरामीटर्स को कनेक्ट करने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमने उसको कहा रेगुलर, अगर उसका जैकोबियन जो है वो नॉन जीरो होगा। और हमने ये देखा कि उसको जैकोबियन नॉन जीरो होने का फायदा ये है that under the two formulas of the same surface, when we evaluate this thing regularity, it may be different numbers, but अगर आर यू क्रॉस आर वी एक पैरामीटराइजेशन में नॉन जीरो है तो दूसरे में भी नॉन जीरो, यानी अगर पॉइंट रेगुलर है तो वो रेगुलर ही रहेगा अंडर डिफरेंट फॉर्मूला। ओके, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसको हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द सरफेस। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द सरफेस हम बेसिकली ढूंढना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्लेन में कोई कर्व होगी, राइट, तो आई नो दैट हाउ टू फाइंड द लेंथ।
और अगर तुमने शायद आर्क लेंथ किया होगा पहले में, तो प्लेन में क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि मैं इसको छोटे से छोटे लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा, राइट, फिर उसको फर्दर रिफाइन करूंगा, मतलब बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन हम करते हैं यूजिंग द मीन वैल्यूज बेसिकली। तो और इंटीग्रेट करके यानी इसको छोटे छोटे हिस्सों में करूंगा, लेकिन जो छोटा हिस्सा है वो एक फ्लैट हिस्सा होगा, राइट। और फ्लैट हिस्से के लिए बेसिकली मेरा, अगर मैं कोई कहेगा व्हाट इज दिस फ्लैट लेंथ, मैं कहूंगा तुम यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, ये जो ये फ्लैट लेंथ है इट इज डी एस, और अगर ये डी एक्स है और ये डी वाई है, दिस इज चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई, then ds square would be always dx square plus dy square। तो ये जो छोटे से फ्लैट हिस्से को जिससे मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, टाइनी टीनी पार्ट ऑफ दिस आर्क, उसको हम कहते हैं बेसिकली मेट्रिक। ये हमें देता है, मतलब मेरे कहने का मतलब ds जो है दैट इज बेसिकली dx square plus dy square in a plane, and if I want to find the length of the plane, length from a to b, I basically take this a to b लेता हूँ मैं, और ds लेता हूँ, उसको मतलब जमा करता हूँ इन छोटे हिस्सों को, that's the as ds becomes very very small. So that is how we find the arc length. Now the question is what happens on the sphere, और उस arc length का मेरे मतलब surface में मैं यहाँ पे कोई लेंथ ढूंढता हूँ, अब भी मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, लेकिन द क्वेश्चन इज ये जो ये सरफेस पे छोटा सा टुकड़ा होगा, छोटा सा फ्लैट टुकड़ा, जिसको मैं जमा करके फिर आकलन ढूंढूंगा, तो उसका क्या मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा, एंड हाउ वुड इट डिपेंड ऑन द इक्वेशन ऑफ अ सरफेस, हाउ वुड इट डिपेंड ऑन द सरफेस। सो वही कहता है हमारा फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, और उसको हम कभी कभी मेट्रिक भी कहते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म or metric of a surface. So let, तो पहले मैं लिखता हूँ R is equal to R at UV be the equation of a surface the quadratic differential form E du square, इसको तुम्हें याद रखना होगा, ये बहुत इन यानी इसके जो वेरिएबल्स हैं वो है स्मॉल चेंज इन u एंड स्मॉल चेंज इन v, where E is equal to the dot product ru dot ru, f is equal to ru dot rv, and g is equal to rv dot rv is called the metric or first fundamental form of the surface. The quantities E, F, G are called first order fundamental magnitudes. और फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल कोएफिशिएंट्स वो भी कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल मीन्स क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है वो डिफरेंशिएबल है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म बेसिकली मीन द क्वाड्रेटिक फंक्शन, बेसिकली सच फंक्शन जो डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स है वो थ्रू आउट सेम है, एंड ऑल पॉसिबल डी डीवी जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो है वही है। और तुमने शायद ये किया होगा मैट्रिक्स थ्योरी में कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के बारे में, बट नेवरदलेस इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इन डी डीवी जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। बेसिकली इट इज द
इट इज द इसका जो स्क्वायर रूट है वो होगा सरफेस पे एक टाइनी इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ का वैल्यू, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मेट्रिक। तो वही हम करने वाले हैं, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन of the first fundamental form. There is also second fundamental form जो हम करेंगे इसी चैप्टर में है, एंड इसको ज्यादा मुश्किल मत समझो क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल है। Now consider the curve u is equal to u at t and v is equal to v at t on the surface. Oh, मैंने कैसे लिखा है? Curve u is equal to u at t, comma v is equal to v at t on the surface r is equal to r at u. So what I have, so I've got, let me draw the surface. अब यहाँ पे एक curve है। अब curve जो है उसका क्या है? It only depends upon one parameter. So अगर if a function is of r u r v, then I must have this u and v must depend upon a single parameter. यानी उसकी प्री में जो u v plane में है वो भी एक curve ही होगी। मतलब मेरा u v plane है, तो this is my u is equal to ut, v is equal to vt जब मैं रखूंगा, so I will get some curve. हाँ, अगर मैं एक को कांस्टेंट करूंगा तो वो पैरामीट्रिक कर्व बनेगी, लेकिन अगर दोनों एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करती है, you know by first chapter से कि there must be a curve, तो उसका जो इमेज होगा वो होगा another set of points, another curve here because it's a continuous function. Okay, तो अगर ये इस पे एक कर्व है, let r and r plus dr be the position vectors, be the position vectors of two neighboring points of the two neighboring points on the curve. मैंने कहा चलो मान लो neighboring means बहुत ही close, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा उसको कोस हम expand करते हैं, वरना surface patch भी काफी small होगा क्योंकि we are interested in local surface theory. तो दो मैंने neighboring points लिए, मान लो ये P है, ये Q है, और P neighboring points मैं लिखता हूँ P and Q, and with parameter values uv and u plus del u, v plus del v respectively. तो मेरे कहने का मतलब है अगर p के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ uv पॉइंट है डोमेन में, तो q की कॉरस्पॉन्डिंग है u plus del u, v plus del v. थोड़ा सा मैंने इनको इंक्रीमेंट दे चेंज किया। ओके, नहीं del u मत लिखो, लिखूंगा u plus d, doesn't matter actually, क्योंकि हम यही लिखेंगे आगे। मतलब it's a small change in u and v, कुछ ऐसा है नहीं, respectively. Okay. Now we know that the differential of r, because r is differentiable by multivariate calculus, should be del r by del u into du plus del r by del v into dv, so which would be equal to, of course, r sub u du हम इसको लिख सकते हैं plus r sub v dv, because r is assumed to be smooth, इसके partial derivatives continuous है, which means it will be differentiable. तो differentiable का derivative या differential हम ऐसे लिख सकते हैं for a differentiable function. Okay, that gives, but what is dr? dr is nothing but, क्योंकि इसका position vector p का ये है, q का ये है, so dr is nothing but it is this vector pq. This is vector pq, this is also my
dr, because it will be position vector of q minus position vector of p. तो dr वो ये वेक्टर है, right? Since pq, yeah, you लिख लो, let the arc length of pq, the arc length pq means this length. ये छोटी सी है, मतलब मैं फिर से इसको एम्फसाइज करना चाहूंगा. मान लो ये है ds, bds, लेकिन चूंकि ये बहुत ही छोटी है, मतलब infinitely small है. Now since the points p and q are neighboring points, मतलब they are infinitely close, तभी तो हम ये d यूज कर रहे हैं ना, छोटा सा tiny सा. Neighboring points, I can say ds must be the same as the length of dr. But this would be the same, this implies that ds square is equal to dr in length ka square, but that would be equal to dr dot dr. But dr is equal to r sub u du plus r sub b dv dot r sub u, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट नॉर्म का स्क्वायर होता है. So that would be equal to, using the dot product distributes our addition, du square plus rv dot ru dv du plus क्या था, ru dot rv du dv plus rv dot rv dv square. मैंने इसको डॉट रख ली और नंबर्स जो स्केलर्स है, चेंज इन यू एंड चेंज बी, इनको अलग किया. So चूंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, so I can write it as plus twice ru dot rv du dv plus rv dot rv dv square. लेकिन this is the same as, क्योंकि इसका नाम e है, हमने रखा है, और उसका नाम f रखा है इस नंबर का, इसका नाम g रखा है, right? So therefore what? So therefore the first fundamental form, कह सकता हूं मैं, fundamental form is the square of the ds, the infinitesimal distance between two neighboring points जिनके पैरामीटर वैल्यूज है uv and u plus du, v plus d. So that is what we call geometric interpretation. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मेट्रिक की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो तो खैर है ही, लेकिन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ये हैं कि ऑफ कोर्स फॉर रेगुलर सरफेस रिमार्क में हम लिख सकते हैं. now for a regular surface, what? For a regular surface, 0 is strictly less than ru cross rv का स्क्वायर, क्योंकि ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसकी लेंथ पॉजिटिव हो, राइट? तो अगर पॉजिटिव है, आई कैन राइट दिस एज ru cross rv dotted with itself, right? Now then I can write it as, इसका डॉट प्रोडक्ट है बीच में, ओके. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं,
Okay. But we know that the triple scalar product का जो idea है. So this dot this cross this जो मैंने तुम्हें कल कहा था A comma B comma C, it is the triple scalar product. अगर मैं इसको सोचूं, this is basically RU cross RV triple scalar RU RV. But we can change the order, and it is also the same as. So this can be also written as, क्योंकि ट्रिपल स्केलर की प्रॉपर्टी होती है, ये होता है बराबर R. मैं इसको अगर रोटेट करूं इन सर्कुलर मैनर, यानी इसको लिखा जा सकता है आर वी यहाँ पे आर यू क्रॉस आर वी कॉमा आर यू, राइट. मतलब इसको सर्कुलरली हम चेंज कर सकते हैं. बट दैट विल बी इक्वल टू, मैंने इसीलिए कहा था आर यू क्रॉस आर वी डॉटेड विद आर. मतलब मैंने इसीलिए कहा था, तुम क्या बोलते हैं, और ट्रिपल स्केलर की प्रॉपर्टीज तुम देख ले. तो वही मैं यहाँ वही ट्रिपल स्केलर की प्रॉपर्टीज यूज करके आई कैन सी दैट दिस मस्ट बी इक्वल टू आर वी क्रॉस आर यू क्रॉस आर वी. मतलब सर्कुलरली इसको चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन टाइप डॉटेड विद आर यू. ओके, बट दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ तो मैंने बचा हो गया, कहीं मैं डायरेक्टली तो नहीं कर सकता था ये. हाँ, डायरेक्टली भी एक फॉर्मूला है, ये भी मैं कर सकता हूँ. लेट्स मेक इट इजियर. एक फॉर्मूला है जो तुम अलग से कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड लाग्रांजेस आइडेंटिटी और कॉची-बिनेट आइडेंटिटी. चलो मैं यहाँ सीधे लिखता हूँ यूजिंग दैट. अब कॉची-बिनेट आइडेंटिटी और कुछ लाग्रांजेस आइडेंटिटी भी इसको कहते हैं. लाग्रांजेस आइडेंटिटी कहती है, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको, हालांकि हम वहां पर भी नहीं पहुंचते. A क्रॉस P डॉटेड विद C क्रॉस D बराबर होता है A dot C multiplied by P dot D for any four vectors minus A dot D multiplied by P dot C. ये मैं अगर डायरेक्टली यूज करूं तो दैट वुड बी बेटर. सो अगर मैं यहाँ पे ये लाग्रांजेस आइडेंटिटी यूज करूं, so this is my A B C D, so I should have A dot D, right? Yeah, sorry, A dot C multiplied by B dot D. And it should be RU dot RU multiplied by बचा RV dot RV minus A dot D into B dot C. So it would be RU dot RV multiplied by RV dot RU. Again, dot product is commutative. So this is basically जो हमने लिया था, it is EG minus H square, right? तो EG minus H square is always positive. तो यहाँ पे हम लिखेंगे using Lagrange's identity, क्योंकि हमें RU dot RU E होता है, RV dot RV G होता है, RU dot RV F होता है, उसका नाम F है. That is I can say, लेकिन इसका नाम भी हमने कुछ दिया था. So EG minus F square is equal to H square is always positive for a regular surface. Okay, now okay, also मतलब ये भी मैं अपने ख्याल आया कि also E must be positive, right? क्योंकि E is basically, E क्या है, is RU dot RU, but that is the same thing as RU square. Now this cannot be zero क्योंकि otherwise it won't be regular, क्योंकि zero के साथ cross product zero हो जाएगा. So this is also to be positive, and G similarly has to be positive for a regular surface. E be positive, G be positive, or H be positive. लेकिन F positive हो ये जरूरी नहीं.
right? F can be 0, F can be negative. Okay, so that's a remark, और इसको हम यूज करेंगे. ओके, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें करनी है, it does not change if I change the parameters. जो metric है या जो first fundamental form है, it does not change if I change my parameters. और पहले उससे पहले it's a positive definite quadratic form. Let me write down properties of the first fundamental form. First fundamental form. So basically, what does it say? When you valley, the metric is a positive definite quadratic form. Positive definite quadratic form. By that we mean जो metric का value है ds square जो हम चाहेंगे हो, it should be positive unless मतलब unless du भी 0 हो, dv भी 0 हो, तब तो ये 0 ही हो, है ना? तो फर्स्ट अगर मैं du dv दोनों को 0 लूं तो ये एक्सप्रेशन 0 होगी, लेकिन अगर मैं 0 ना लूं तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, ये पॉजिटिव ही रहेगा, राइट, फॉर अ रेगुलर सर्फेस. सो पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब वही है, इट वुड बी पॉजिटिव unless both du and dv are 0. तो प्रूफ इसका, now since E is positive, जो मैंने कहा for a regular surface E is positive, so we may write what E du square को मैं लिखूंगा plus twice f du dv जो मेरा first fundamental form है, plus dv square को अगर मैं लिखूं 1 by E into E square du square plus twice fe du dv plus gp, मैंने g से e से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी मैं कर सकता हूँ because it is positive. Now that can further be written as e du plus f dv का whole square plus of course e g तो है ही, इस स्क्वायर आ गया, ट्वाइस ए भी आ गया, तो बचा क्या, माइनस एफ स्क्वायर डी स्क्वायर. मैंने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, as you saw. That would be 1 by e into e du plus f dv का स्क्वायर. That would be plus eg minus f square into dv square. पहली बात तो ये है कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा. वाई? क्योंकि ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है, ये भी स्क्वायर है, क्योंकि हम कर चुके हैं ना कि eg minus f square is for a regular space is positive, so ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, right? Also, of course, this is true for all du dv, for all real values and real numbers du dv. अब मान लो ये 0 है, and if e du square plus twice f du dv plus g dv square is equal to 0. Now this is sum of non-negative numbers. तो अगर ये 0 है तो दोनों 0 होने चाहिए. You should have e du plus f dv is equal to 0, and साथ में हमें h dv square भी 0 चाहिए. So that would imply that e du plus f dv 0 होना चाहिए, और साथ में dv भी 0 होना चाहिए, क्योंकि h तो 0 होगा नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स कैन नॉट बी 0. लेकिन अगर f dv 0 है तो इसका मतलब e du must be 0 and dv must be 0.
which implies that du must be equal to 0 and dv both must be 0 क्योंकि e 0 नहीं हो सकता, right? For a regular surface, यानी इसी को हम कहते हैं it's a, so hence that is both सीधे लिखते हैं, therefore e du square plus twice f du dv plus g dv square is a positive definite quadratic form. ऐसे हम मैट्रिक्स थ्योरी का मैं यूज करता, उससे डायरेक्ट आ जाता, because you can write this as, अगर तुम ध्यान से दोगे तो you can write in a matrix form e du square, अगर मैं इसको as a 1 by 1 matrix लूं तो अगर तुम चेक करोगे, अगर मैट्रिक्स थ्योरी को यूज करेंगे, इसको अगर मैं लिखूं इस तरह से du dv, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, so it should be f, I think नहीं, e ggf multiplied by du, right? तो हम कहते हैं ये एक पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, which means इसके उसके लिए एक इक्विवेलेंट कंडीशन है कि इसके जो प्रिंसिपल माइनर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव, और इसके प्रिंसिपल माइनर्स हैं, एक तो e है जो कि पॉजिटिव है, दूसरा है e g minus f square वो भी पॉजिटिव है, therefore this is a positive. मतलब अगर मैं मैट्रिक्स थ्योरी को यूज करूं तो इतना ही है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो कि हमने किया, ओके। दूसरा है सेकंड प्रॉपर्टी, द मेट्रिक रिमेन्स इनवेरिएंट, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इनवेरिएंट if the parameters u and v are changed, but under a proper transformation that's assumed, changed to u prime v prime. इसका प्रूफ भी बड़ा इजी है, मैं तुम पे छोड़ दूं। Okay, suppose the parameters u and v are changed via the transformation. Via the transformation let's say u prime is equal to some phi of uv and v prime is equal to some psi of uv. These are smooth functions, differentiable function with two variables, वो तुम्हें याद रखना है। Then जैसा कि मैंने कहा था चेन रूल के हिसाब से r u prime can be written as del r by del u prime, but u prime themselves are functions of u and v, so I can write it as del r by del u into del u prime, del u by u prime, right? Plus del r by del v into del v by del u prime, and r's that this is equal to r sub u into del u by del u prime plus r sub v into del v by del u prime. And r v prime by the same reasoning would be r sub u into del u by del u prime plus r sub v into v prime. Yeah, v prime है ना, del v by del v prime. So let's call this set of this pair of equations 1. Also, because u and v, they're both ways differentiable, my transformation equations, they're smooth. So I can write change in u in terms of u prime and v prime. मैं इसको लिख सकता हूँ as a differential इस तरह से, plus del u by del v prime dv prime
उसी तरह से मैं dv को लिख सकता हूँ del v by del u prime du prime plus del v by del v prime dv prime. Let's call this pair of equations second. Now let e prime du dot prime plus मैं सीधे ही मिल लेता हूँ मतलब it's understood what do I mean by that यानी now if e prime f prime and g prime are the fundamental magnitudes here are the first order fundamental magnitudes with or at u prime v prime यानी जो नहीं हमने parameterization की then I can write e prime du prime का square twice f prime du prime dv prime plus g prime dv prime का square इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I can write it as ru prime dot ru prime into du square plus twice ru prime dot rv prime, that is the definition, into du prime dv prime plus rv prime. अभी जो हमने इससे पहले किया था अगर तुमने ध्यान दिया होगा I can write it as the length of ru prime du prime plus rv prime dv prime plus square. Okay, so but using my equation 1 for ru prime and rv prime and du prime और dv prime, तो अगर मैं 1 यूज करूं और by 1 में पहले लिख देता हूं 1 का मतलब मैं ru prime और rv prime के लिए ये सब्स्टिट्यूट करूंगा. So that would give me, what does that give me? That gives me, this is basically the length of ru prime del u by del u prime plus r v into del v by del v, del u prime whole multiplied by du prime plus r u into del u by del v prime plus r v into del v by del v prime whole multiplied by dv prime in norm का square. ये वैसे easy है. Okay, so by 1. That is, I can write this e prime du prime का square plus twice f prime du prime dv prime plus g dv prime का square is basically, अब अगर मैं इसमें ru वाले कंपोनेंट्स अलग निकालूं rv वाले कंपोनेंट्स को अरेंज करूं तो ये बन जाएगा r sub u into कॉमन निकालूंगा del u by del u prime du prime plus del v by del v prime dv prime plus rv into del v by del u prime du prime plus del, I think I should have del v by del v prime dv prime is का square. So that would